Hello everyone and welcome to another video in this channel. So in this video we'll be talking about we'll be very briefly talking about the Kanva dynasty. There is not much information available or not much information to be known about the Kanva dynasty, and something which everyone should actually remember, which is not that important, but only one point is that the Kanva dynasty was the successive dynasty to the Shunga Empire, and it was established by Vasudev Kanva, and that the epics and inscriptions which we find of the Kanva dynasty only mentions a few kings. So these are the things that we'll be discussing in this video. So let's move forward. Now I have provided a map here of the Kanva dynasty. So as you all can see in this map, a number of kingdoms have been already mentioned. The places have also been marked out. So the Kanva dynasty part that you all see in this map is the area of Magad. So as I have already told you in earlier videos, what used to happen is when a king or when a new ruler used to occupy an area and he used to rule that area, he successively gained each and every territory that earlier ruler had in possession. यानी कि अगर कोई एक राजा या फिर एक कोई नया राजा आता था एक एरिया में जीत के या फिर एक लड़ाई जीत के, अगर वो एक नए एरिया का राजा बनता था, तो जो पहले वाले राजा के एरियाज थे उनको वो सारी की सारी संपत्ति मिल जाती थी. तो मगध जो था, मगध बहुत पहले से ही एक इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है बहुत सारे किंगडम्स के लिए. जैसे पहले मौर्यास के लिए था, फिर मौर्यास के बाद वो मगध शुंगास के पास आया. शुंगास के पास जब लास्ट शुंगा किंग को मार के वासुदेव कन्वा ने डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, तो उनका भी ये बेस बन गया मगध. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मगध को जो है मार्क किया गया है अलग कलर से, जो है थोड़ा येलोइश कलर से मार्क किया गया है. तो वो बेसिकली बेस था कन्वा डायनेस्टी का. जस्ट रिमेंबर दिस मैप, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Let's now come to the content part. So as I already told you, this is not a very big empire. So we will be only focusing on three important parts. That is the origin of the empire, who founded the empire, when was the empire founded, where was it located, then the list of important kings, and finally the decline of empire, कि कैसे खत्म होता है empire. और यही तीन चीजें जो है हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो now let's move forward to the first point, which is the origin of the empire. So the origin of the dynasty. So Vasudev Kanva was the founder of the Kanva dynasty, and he founded the dynasty when he overthrew the Shunga empire, and he did this by killing the last Shunga king Devabhuti. So he killed Devabhuti somewhere around 73rd BCE as believed by historians, and then he overthrew the Shunga empire. And in the ruins of the Shunga Empire, he founded the Kanva dynasty, or his own empire. So, chronologically, Shunga Empire was dethroned by Vasudev Kanva, and then the Kanva dynasty was founded. As simple as that. And regarding the location, as I have already told you when I was discussing about the map, that primarily they were believed to have ruled in Patliputra. जो इनका बेस था वो पाटलिपुत्र में ही माना गया था. बट मेनी कॉइन्स हैव बीन फाउंड ऑफ दैट एरा, व्हिच मेक्स मेनी हिस्टोरियंस बिलीव और व्हिच प्रोवाइड्स एविडेंस दैट दे माइट हैव रूल्ड समवेयर अराउंड विदिशा इन सेंट्रल इंडिया. जो विदिशा का जो पार्ट था वहां पे भी उनका रूल माना जा सकता है, इफ वी गो ऑन टू बिलीव बाय द कॉइन्स दैट हैव बीन फाउंड फ्रॉम दैट एरा. एंड रिगार्डिंग द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ द एम्पायर और द lineage part, the Kanvas were totally Brahmins, as were I believe the Shungas also, and they descended from the line of sage Saubhari. तो जो ऋषि सौभारी थे उनके lineage से आए थे Kanvas, और वो total Brahmins थे. And the first ruler of the dynasty, which is I already told you, Vasudeva Kanva, and the dynasty was kept after his गोत्र. तो जो कन्वा था वो उनका गोत्र था, और उस गोत्र के बाद ही उनका नाम रखा गया था. So the important part that we should all remember is कि वासुदेव कन्वा ने पहले शुंगा एम्पायर को डिथ्रोन किया, फिर अपना खुद का एम्पायर फाइंड किया, फिर उसके बाद इनकी राजकाल जो है वो मगध में ही माना जाता है. उसके बाद ये ब्राह्मण्स थे लीनिएज से, और इनके गोत्र के नाम पर इस डायनेस्टी का नाम रखा गया है, which is basically the Kanva dynasty. Now we'll see the list of important kings during that